Hello everyone and very good morning all. Very good morning everyone. Welcome you all to Ada 24/7 Odia YouTube channel and this is Satya Sir Pedagogy. समस्त welcome करछि पिला Ada Odia को. Very good morning everyone. जेमति कि पिला माने हम माने डिस्कशन करछे SSB TGT regarding pedagogy ro mock test. We have already discussed around 17 mock test. as we 18 mock test discussion करियो. 18 mock test में we discussion करछे around 350 क्वेश्चन 350 क्वेश्चन डिस्कशन करछे. तो जो माने भी सेशन रे अछंती समस्त सेशन कोटे लाइक एंड शेयर कर दियंतु. Then we will start our session. Very good morning all. Good morning everyone. Good morning. समस्त कोटे लाइक एंड शेयर कर दियंतु माने. Then we will start our session. Good morning everyone. Good morning all. Very good morning everyone. चलो पिला माने आज हम मन भाई छोटिया थोड़ा दिन मो तरफ you learn something new every day you listen. जदि हम सुनिबार आग्रह अछि जदि हमें इधर एबिलिटी अछि जे हां वी कैन ए जो जिनसडा हम कहछे जिनसडा हम भीतर रहया दरकार. ऑलवेज क्यूरियोसिटी रहया दरकार जे हां मु पारिबी हां मो द्वारा ही परिबो. You learn something new every day you listen. Remember it. मन रखा दरकार. ठीक अछि. चलो. सो आमे माने डिस्कशन करबा आज आपनकर लास्ट होमवर्क रो आंसर. ता सहित मॉक टेस्ट नंबर 18 टुडे विल डिस्कस एंड लास्ट को आपन मन पई होमवर्क अछि. लास्ट आपन मन पई होमवर्क अछि. होमवर्क रो आंसर आपन माने देवे कमेंट बॉक्स रे. ओके चल एटा थला लास्ट होमवर्क जे ईएल थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ एक्सरसाइज. तो जोडा को लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहूचे बा लॉ ऑफ प्रैक्टिस कहूचे मींस व्हाट. थॉर्नडाइक टेक्स प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स रेडी टू लर्न. एटा तो लॉ ऑफ रेडीनेस. लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स इज रिवार्डेड. एटा लॉ ऑफ इफेक्ट. रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटी इज फॉर मोर रिटेंशन. एटा होची लॉ ऑफ तो गोटे एक्टिविटी को रिपीट करबा बारंबार प्रैक्टिस करबा अधिक समय मन रहइबो. यस एंड लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द स्टूडेंट्स इज पनिश्ड. एटा तो कदा भी नै. आंसर इज 3 ऑप्शन 3. आंसर बहुत सारा पिला दैछन तो कि सारा पिला नाम मेंशन कर छै. हरप्रिया मोनालिसा नेगेटिव वर्ड पीडीएफ दे दीजिए. ऑलरेडी पीडीएफ देइछि. बादल पायल शुभंकर सुश्री प्रियंका मिताली कृष्णा मंदाकिनी प्रियंका कर सस्मिता आरती पूजा मिस्टर लक रेणुका शुभश्री मनोज प्रियदर्शिनी कर अनंत दीपांजलि दीपज्ञा निवेदिता मधु सदांजलि मानस सस्मिता सिंबल लिपिका विश्वाल मोनालिसा स्वर्णप्रभा प्रियंका रश्मिता प्रियंका साहू प्रियंका बहुत सारा दिव्यरंजन बेहरा मामून अनिशा. आंसर तुम भूल कर आंसर 3 हम. हाँ ठीक. तो बहुत सारा पिला ढेर सारा पिला आंसर देसन. समस्त पिला थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच पिला माने समस्त. यस जिबा हम स्टार्ट करबा.
मॉक टेस्ट नंबर 18 रो क्वेश्चन नंबर 1 मॉक टेस्ट नंबर 18 रो क्वेश्चन नंबर 1 हाउ टू गेट पीडीएफ सुबस्मिता कि अच्छे मेसेज कर दे टिप ला Which psychologist is known for his pioneering work in classical conditioning with little Albert experiment? With little Albert experiment. Little Albert experiment even be Pavlov. नहीं जो लिटिल आल्बर्ट एक्सपेरिमेंट कहे लिटिल आल्बर्ट एक्सपेरिमेंट करते फास्ट जेबी वाटसन ही लिटिल आल्बर्ट एक्सपेरिमेंट करते क्लासिकल कंडीशनिंग लिखाई बोली तुम मैंने खाली कहनी जे एटा पावलोव बोली यस जेबी वाटसन जॉन बी वाटसन हैज डन द लिटिल आल्बर्ट एक्सपेरिमेंट से ही स्टार्ट करते से ही कंडीशनिंग स्टार्ट करते कंडीशनिंग वर्क को फर्दर आगू को नहीं आपन के Ivan V. Pavlov. Yes. So answer is option A. Done. Question number 2. In classical conditioning, what term describes the tendency to respond to a stimulus that is similar to conditioned stimulus? In classical conditioning, what term describes the tendency? What term describe the tendency to respond to a stimulus that is similar to the conditioned stimulus. Discrimination, extinction, generalization, habituation. What does it called? It is called as generalization. Generalization will कहा जाए. In classical conditioning, what term describe the tendency to respond to a stimulus that is similar to conditioned stimulus? Sir, classical conditioning रे conditional stimulus थिला bell. Response थिला आपनकर salivation, dog रो salivation एटा थिला response. पावलोव खाद्य देवा पूर्व गोटे बेल बाड़ुंट मनकर पावलोव घर कलिंग बेल बाजिला पावलोव घर माँ पूजा कर माँ मनकर बेल बाड़े घंटी बाड़े प्रति घंटी साउंड रे एव्री बेल साउंड रे जदि डग सालिवेट कर डग डिस्क्रिमिनेट कर पारनी जे मो बेल कौटा यस किंबा पावलोव को बेल कौटा जोटा जो मत खाद्य मिलूँ डग जदि सब प्रकार बेल साउंड रे सालिवेट करुच्ची सेटा हूँ जनरलाइजेशन सब प्रकार बेल साउंड रे सालिवेट करुच्ची गोटे 15 लंच टाइम छुआंकर खाया छुट्टी टाइम साइड रोड दमकल गाड़ी गला छुआ बाहर पड़े दमकल गाड़ी साउंड शुणिकी छुआ बाहर पड़े छुआ जापारे दमकल गाड़ी साउंड कौटा आम स्कूल घंटी कौटा जदि डिफरेंट स्टिमुलस रे तुम सेम रेस्पॉन्स दो ताको जनरलाइजेशन कहा जाए यदि डिफरेंट स्टिमुलस रे आम डिफरेंट रेस्पॉन्स दो ताको डिस्क्रिमिनेशन कहा जाए यस तो आंसर इज ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 3 what is the term for the reappearance of an extinguished conditions response after a period of rest? Spontaneous recovery, operant conditioning, latent learning, habituation. What is the answer? जे जन अच्छा सेशन में समझ पे सेशन गोटे लाइक कर दिया करा लाइक तर ऑर्डर दिया व्हाट डज इट कॉल्ड कौन कह व्हाट इज द टर्म फॉर द रीअपियरेंस ऑफ एन एक्सटिंग्विश्ड कंडीशनड रेस्पॉन्स आफ्टर ए पीरियड ऑफ रेस्ट पावलोव को एक्सपेरिमेंट कथा मन पका पावलोव बेल बाड़ौले खाया को दौले कुकुर रेस्पॉन्स करथला बा सालिवेट करथला
कुकुर हाबिचुएटेड हो गला जे बेल जिते बेलटा बाजुची मालटा आसूची तेणु से सालिवेट कर बेल बाजू बाजू से बेल बाजू बाजू से सालिवेट करने चेष्टा करथुला बेल बाजू बाजू से सालिवेट करने चेष्टा करथुला बेल बाजू बाजू से सालिवेट करने चेष्टा करथुला खाया मिले आशा पाब्लो खाली बेल बाड़े देले भी कुकुर सालिवेट कला खाया मिले आशा खाଇବା मिले आशा बेल बाजिला सालिवेट कला एमती 10-15 दिन 20 दिन खाली बेल बाड़े खाया को देले नहीं धीरे 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 डॉग सालिवेशन कमिला से सालिवेशन कलानी पाब्लो गोटे ठकरा मत बेल बाड़े खाया दौनी सालिवेट कला नहीं बट हाबिचुएटेड हो जाइथिला से जिनस सहित मासे वर्षे 2 वर्ष पर कुकुर को पुणी लाबोरेटरी कणा है पाब्लो हठात बेल बाड़े देछंदी सागे सागे मोर सालिवेट कर दूची मन पड़ जाए तो पुराना कथा तेणु जब हाबिट फर्मेशनटा प्रॉपर्ली होता है तुम से जिन के भूलबनी हठात पुणी मन पड़ जाए तुम छुआ बेले ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पूरा भलसे पढ़ीच पणिका भलसे पढ़ीच आजिका डेट्रे ए पचार ए फॉर एप्पल ही तुम पाटर बाहर एरोप्लेन बाहर ना एरोप्लेन सेकंड चॉइस बाहर दैट इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी कौन तो कहवा दैट इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी आंसर इज ऑप्शन ए डन क्वेश्चन नंबर 4 in classical conditioning what is the term for a response that is naturally and automatically elicited by an unconditional stimulus conditional response unconditional stimulus conditional stimulus unconditional response कौन का आंसर what is the right answer आंसर दियंत पिलाने मेसेज कर दे कमेंट कर दे क्वेश्चन पढ़ना रिप्लाई कर दे पुणी डिलीट कर दो इन क्लासिकल कंडीशनिंग व्हाट इज द टर्म फॉर रेस्पॉन्स दैट इज नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली एलिसिटेड बाय एन अनकंडीशनल स्टिमुलस सर अनकंडीशनल स्टिमुलस पाब्लो का एक्सपेरिमेंट रोज फूड अनकंडीशनल स्टिमुलस को आम अदरवाइज नेचुरल स्टिमुलस भी कहीपर नेचुरल न्यूट्रल नो नेचुरल स्टिमुलस अनकंडीशनल स्टिमुलस फल जो रेस्पॉन्स आसे ताको अनकंडीशनल रेस्पॉन्स भी कह जाए नेचुरल कथा खाद्य देखले कुकुर लाल गलिबो नेचुरल कथा मनकर तुम खटा देखले लाल गलिज पाटी नेचुरल कथा जो स्टिमुलस नेचुरली रेस्पॉन्स क्रिएट करे ताको अनकंडीशनल स्टिमुलस कह जाए से नेचुरल रेस्पॉन्स को अनकंडीशनल रेस्पॉन्स भी कह जाए यस से पचास नेचुरल रेस्पॉन्स को हम कौन कहबा अनकंडीशनल रेस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू इन द स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 5 in operant conditioning what term describe the process of strengthening a behavior by presenting a desirable stimulus after behavior occurs positive reinforcement negative reinforcement positive punishment negative punishment this is an operant conditioning but Skinner का conditioning in operant conditioning रे what term describe the process of strengthening the behavior बढ़े by presenting a desirable stimulus पिला को भल लगुवा जिनस दबा जहाँ द्वारा तार बिहेवियर बढ़ो ताको आम पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट कहवा सर नेगेटिव रिइंफोर्समेंट यहाँ हूँ अनडिजायरेबल स्टिमुलस पिला चाहेनी नेगेटिव रिइंफोर्समेंट आम दौ जबरदस्ती ताठू कौन जिन छड़ाई नौ छड़ाई नवाटा सी चाहेनी नेगेटिव ये जी अनडिजायरेबल लिखाई था तुम नेगेटिव रिइंफोर्समेंट आंसर दे था बिहेवियर स्ट्रेंथन हुए बिहेवियर स्ट्रेंथन हवाटा सब स्ट्रेंथन बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने आम सब रिइंफोर्समेंट दौ बिहेवियर को वीक करने माने कौन से खराब अभ्यास को छड़ाई आम पनिशमेंट दौ टू स्टॉप द बिहेवियर वी प्रोवाइड पनिशमेंट टू स्ट्रेंथन द बिहेवियर वी प्रोवाइड रिइंफोर्समेंट पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट इज ए डिजायरेबल स्टिमुलस जो पिला को भल लगे नेगेटिव रिइंफोर्समेंट इज अनडिजायरेबल स्टिमुलस when you provide desirable stimulus to strengthen the behavior positive reinforcement when you provide undesirable stimulus to strengthen the behavior provide the no remove छड़ाई नौ पिला मन ठू सेटा होची नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू
According to operant conditioning, what is the primary focus when it is comes to shaping behavior? Stimulus response association, reinforcing successive approximation to the desired behavior, creating a conditioned emotional response, establishing conditioned reflexes. According to operant conditioning, what is the primary focus when it comes to shaping the behavior? Behavior shape कला बेले आमे कौन अप्लाई करूँ? What is the shaping behavior? Shaping behavior माने कौन? मने करो गोटे लोकटे सिगरेट टाणुची सब सिगरेट टाणे चेन स्मोकर ता भितर ताठू आम तार अभ्यासटा दूरवर्त करने चाहूचे से मनकर दिन को 10 पैकेट टाणुची 9 पैकेट दवा मस खंड 9 पैकेट चालू तापर मस खंड 8 पैकेट चालू तार मस खंड 7 पैकेट तापर मस खंड 6 पैकेट 6-8 कमी कमी दिन गोटे लेखा ये जो गोटे गोटे धीरे धीरे कमाऊ बिहेवियर सडनली के डिक्रीज करें सडनली इंक्रीज करें इटार प्रोसेस सक्सेसिवली बढ़े वी इनफोर्स द सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन टू डिजायर्ड बिहेवियर ताको शेपिंग बोली कह जाए शेपिंग सबुठे अप्लाई कराऊँ आमर जमी गोटे छोट छो कुरकुरे को भल पाँच केमी कुरकुरे कंपनी कौन कर रखीदे गोटे टय रखीदे टाटू रखीदे पिला टाटू आ टय पाइबापी से कुरकुरे किणुचे कौन चिप्स किणुचे धीरे धीरे टाटू एमती लिखाई जे 5टा कुरकुरे किनले गोटे बड़ टय मिल से किणुची खाऊ एमती मसे 2 मास खाला बेले से कुरकुरे सहित पूरा अभ्यास हो जाए टय पाइबा आशारे कि आउ कि भल लगुना चिप्स ताकू से कुरकुरे ही भल लगुच गिफ्ट दिया सक्सेस एटा शेपिंग बा धीरे धीरे अभ्यास परिणत करा शेपिंग गोटे दिन रे हुए नहीं धीरे धीरे करा yes. Which psychologist is most closely associated with the development of operant conditioning theory? Which psychologist is most closely associated with the development of operant conditioning theory? Operant conditioning theory सहित को psychologist mostly closely associated? J.B. Watson, Ivan Pavlov, B.F. Skinner, Albert Bandura. Which psychologist is most closely associated operant conditioning? एटा कोई दी परियो संकेत B.F. Skinner. इतना समय नंबर नहीं. Question number 8. In operant conditioning, what term used to describe the process of removing an aversive stimulus to strengthen a behavior? Positive reinforcement, negative reinforcement, positive punishment, negative punishment. सब गोटे कथा पे दबा माने पॉजिटिव नबा माने नेगेटिव दबा माने पॉजिटिव नबा माने नेगेटिव दबा माने कौन पॉजिटिव अरे नबा माने कौन नेगेटिव when you remove something that is negative बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने पे कौन दिया जाए reinforcement मन रखता to strengthen the behavior reinforcement when you add something positive when you remove something negative सादा कथा तो remove something लिखा है नेगेटिव हम strengthen the behavior reinforcement हम आंसर आर बी नेगेटिव reinforcement positive punishment नो जीएफ स्किनर हम ना जीएफ स्किनर भयंकर पिला मु कहली रिइंफोर्समेंट ही बिहेवियर को स्ट्रेंथन करे पॉजिटिव माने दबा नेगेटिव माने छड़े नबा कहली नहीं स्ट्रेंथन द बिहेवियर वी प्रोवाइड रिइंफोर्समेंट कहली बा मु पॉजिटिव माने दबा नेगेटिव माने छड़े नबा when you add something that is positive when you remove something that is negative. What is the term for a scheduled reinforcement where reinforcement is provided after a variable number of response on average? That is fixed interval schedule, variable ratio schedule, fixed ratio schedule, variable interval schedule. What is the term for a scheduled reinforcement where reinforcement is provided after a variable number of responses on average?
after a variable response of number of responses on average. Variable ratio schedule बोली कह एक्चुअली कौन मनकर तुम परीक्षा कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10टा मॉक टेस्ट कर 10टा टेस्ट कर 10टा टेस्ट कर प्रथम थर प्राइज देउनी द्वितीय थर दौची तृतीय थर दौनी चतुर्थ दौची यदि गोटे छाड़ी गोटे गैप गोटे छाड़ी गोटे फिक्स्ड टाइम गैप रे मु प्राइज दौची फिक्स्ड टाइम गैप रे मु प्राइज दौची ताको कह जो फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल टाइम गैप रे यस मु प्राइज दौची किंतु फिक्स नहीं प्रथम देदेली द्वितीय देलिनी तृतीय देली देलिनी चतुर्थ देदेली पंचम देलिनी षष्ठ देलिनी सप्तम देलिनी अष्टम देलिनी नाइन्थ देलिनी टेन्थ देदेली when time period is not fixed that is variable interval इंटरवल टा कहाँ पर डिपेंड कर टाइम ऊपर मु जदि गोटे छाड़ी गोटे फिक्स्ड टाइम गैप रे पिला को प्राइस दउची फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल टाइम गैप इज नॉट फिक्स्ड मन इच्छा दउची सेटा होची वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल मन कर प्रथम रे फास्ट इज ए एथरे फास्ट इज बी एथरे ए एथरे सी एथरे डी एथरे एफ एथरे ई एथरे ए एथरे बी एथरे सी एमन सब फास्ट है पिला रेस्पॉन्स को देखिकी मुझे कही जो पिला दिथर फास्ट हम जो पिला दिथर फास्ट हम ताको प्राइज देवी प्रथम थर देवी ए को प्रथम थर देवी द्वितीय थर देवी बी को प्रथम थर देवी द्वितीय थर देवी सी को प्रथम थर देवी द्वितीय थर देवी जो आप ये फिक्स कले जे नंबर ऑफ करेक्ट रेस्पॉन्स अनुसार जो पिला दिथर फास्ट हम ताको प्राइज देवी सेटा फिक्स रेशियो शेड्यूल कौ टेस्ट देवी क्या देवी जना नहीं बट प्राइज देवी कौ टेस्ट देवी क्या देवी जना नहीं बट प्राइज देवी नंबर इज वेरिएबल दैट इज वेरिएबल रेशियो शेड्यूल वेरिएबल रेशियो शेड्यूल पिला सब टेस्ट पे पढ़े समस्ते पढ़े पाइबा तेनाली वेरिएबल रेशियो शेड्यूल वेरिएबल रेशियो शेड्यूलटा पिला भितर बिहेवियर बेसी एलिसेट करे वेरिएबल रेशियो शेड्यूलटा बेटर इन कंपैरिजन चार्टा इधर टाइम पीरियड फिक्स्ड टाइम पीरियड इज नॉट फिक्स्ड इधर रेस्पॉन्स इज फिक्स्ड रेस्पॉन्स इज नॉट फिक्स्ड जो रेस्पॉन्स वेरिएबल ताको वेरिएबल नंबर ऑफ रेस्पॉन्स कह जाए तो आंसर इज ऑप्शन बी डन इन ऑपरेंट कंडीशनिंग व्हाट टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग ए बिहेवियर बाय प्रेजेंटिंग ए डिजायरेबल स्टिमुलस आफ्टर बिहेवियर अकर्स एटा तो कहि देछ ऑलरेडी क्वेश्चन रिपीट हो जाए पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट सिलाई क्वेश्चन पछरे पॉजिटिव रिपोर्ट हो जाए ए क्वेश्चन सेम क्वेश्चन according to operant conditioning what is the primary focus when it comes to strengthen the shaping the behavior the same question repeat है तो repeat है ना अबे repeat है जी जेटा क्वेश्चन 4टा क्वेश्चन रिपीट है स्लाइड कॉपी है 4-5टा क्वेश्चन स्लाइड कॉपी है सॉरी फॉर दैट पिला 4टा खंड क्वेश्चन स्लाइड कॉपी है सॉरी 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 फॉर ये गोटे हिंदी अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक लॉ ऑफ रेडीनेस लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन डैश द लर्नर इज फिजिकली मेंटली प्रिपेयर्ड टू एंगेज इन लर्निंग टास्क यस the learning environment is stimulating and engaging the material is presented in various format the learner is motivated by external rewards it option यही हम जो learner physically when the learner is physically and mentally prepared to engage in learning task when the learner is physically and mentally prepared to engage in learning task ताको ही हमें कहूँ ऑपरेंट कंडीशन जो लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ रेडीनेस को अदरवाइज कह जाए law of motivation otherwise law of motivation भी कहा जाए otherwise law of preparedness भी कहा जाए otherwise law of engagement भी कहा जाए law of motivation law of preparedness law of engagement
यस डन। चलो क्वेश्चन नंबर 16। According to Thorndike law of effect, behavior that lead to satisfying consequence are dash. Likely to be repeated in future, unlikely to be repeated in the future, not influenced by their consequence, only relevant in social situation. The law of effect रे satisfying consequence यदि फलाफल भल मिले कौन से गोटे कम कर मनकर गला गोटे झील को प्रपोज कला से गोटे जाबडा पाइला आउ के पछरे जीव ना परपोज कला हसीदेला आउ पछरे जीव कौन से गोटे साटिस्फाइंग कन्सिक्वेन्स यदि मिले आम से कमटा को रिपीट करूँ जदि डिसाटिस्फाइंग से लॉ ऑफ इफेक्ट को अदरवाइज लॉ ऑफ प्लेजर एंड पेन बोली कहुए अदरवाइज ताको लॉ ऑफ प्लेजर एंड पेन बोली कहुए The result of an action is pleasureful, we'll repeat that task again. If result is painful, we'll not repeat that task again. Yes, it's likely to be repeated in the future. Satisfying consequence action will likely to be repeated in this unsatisfying consequence मिले हमें हबनी हो. Yes, बुझेला? चलो. What term did Thorndike use to describe the process by which behaviors followed by satisfying consequence become strengthened and more likely to occur in the future? Operant conditioning तब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं. What term did Thorndike use to describe the process by which behaviors followed by a satisfying result? ये तो कहते जस्ट एक लॉ ऑफ इफेक्ट बोली कह हमें कौन कह हमें लॉ ऑफ इफेक्ट जब satisfying consequence मिलला हमें the behavior likely to be strengthened. Yes, प्रायतः लर्निंग थ्योरी क्वेश्चन रही. According to Thorndike's law of exercise, which factor is important for strengthening a connection between stimulus and response? According to law of Thorndike, the law of exercise, which factor is important for strengthening the connection between a stimulus and response? The frequency of stimulus response pairing, the intensity of the stimulus, the level of motivation of the learner, the complexity of the learning task. Thorndike law of exercise अनुसार को फैक्टर लर्निंग स्टिमुलस रेस्पॉन्स भितर कनेक्शन को स्ट्रेंथन करे. इंटेंसिटी, लॉ ऑफ मोटिवेशन, कॉम्प्लेक्सिटी. लॉ ऑफ मोटिवेशन नुहे ये पचारिबा मैं पचारचिबा लॉ ऑफ एक्सरसाइज माने जो जिंस को हम जत्ते बारंबार करिबा रिपीट करिबा. द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस रेस्पॉन्स पेयरिंग फ्रीक्वेंसी को बारंबार करिबा रिपीट करिबा. लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहि परिबा तो हम लॉ ऑफ रिपीटेशन भी कहि परिबा लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी कहि परिबा. फ्रीक्वेंसी कहि लॉ लेवल ऑफ मोटिवेशन कथा पचारनी लेवल ऑफ मोटिवेशन मैटर करे लॉ ऑफ रेडीनेस रे कोत मैटर करे लॉ ऑफ रेडीनेस रे फ्रीक्वेंसी बाय रिपीटेशन बाय रिपीट बारंबार. Question number 19. Which Thorndike's law focuses on the idea that responses that are not followed by a satisfying outcome are less likely to occur in the future? The law of effect, the law of readiness, the law of exercise, the law of disuse. Thorndike को law कहूची जदि कौन सी गोटे काम करिवार फलाफल भल न हुए से काम आउ थे रिपीट आम करवा ना यही लॉ ऑफ इफेक्ट अलरेडी मैं कही. According to Jerome Bruner, what is the central idea behind discovery learning? Jerome Bruner का मत रे what is the central idea उन्नीस नंबर डी कहीं कौच 19 नंबर डी कौन पे कौच लॉ ऑफ डिस्यूज कौन पे लॉ ऑफ डिस्यूज तो अलग आए
ठीक इफेक्ट हम ना कहले से व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ बुर्नर्स डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी लर्निंग इज फैसिलिटेटेड थ्रू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लिसिट टीचिंग learner construct their own understanding through active exploration and problem solving learner निजे निजे actively explore करन knowledge भलो कथा लिखा है knowledge is best acquired through passive तो कथा नहीं डिस्कवरी कथा पछे डिस्कवरी पिला माने निजे इन्वॉल्व होंती निजे बहुत सारा जिंस को एक्सप्लोर करंती यस तो आंसर जो है बी क्वेश्चन बी करेक्ट ओके जजन भी अच्छा सेशन रे पिला माने गोटे लाइक कर दे पिला सेशन समस्त गोटे लाइक द सेशन चल क्वेश्चन नंबर 21 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी लर्निंग what term does Brunner use to describe the process of organizing information into meaningful categories or concepts? Scaffolding, categorization, coding, schema formation. In the context of discovery learning context रे Brunner को term use करछंती the process of organizing information into meaningful categories. Information गुडा को मीनिंगफुल कैटेगरीज रे ऑर्गेनाइज करके माइंड रे सजे रखिबा तो कैटेगराइजेशन नहीं कोआ होछ तो किछ नहीं इट इज कैटेगराइजेशन क्वेश्चन नंबर 22 तो मना कर लाइक करिया पेन तुमको अकॉर्डिंग टू ब्रुनर व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन ए डिस्कवरी लर्निंग एनवायरनमेंट रे रोल ऑफ ए टीचर कोन to provide step by step instruction and a solution to the problem पिला को solution दे देवा ना to act as a facilitator provide guidance support as learners to explore concept and solve problem discovery learning हो कि constructivism रे हो सब बड़े टीचर रोल हो जी to act as a facilitator teacher should act as a facilitator providing guidance and supports plus scaffolding दिए learners to explore concept and solve problem in discovery learning in constructive approach according to Nancy 2005 the role of a teacher is a facilitator the answer is the B question B better okay question number 23 for you which term did Jerome Brunner introduce to describe the process of breaking down complex tasks or concept into smaller or more manageable parts scaffolding chunking threading segmentation which term did Jerome Brunner introduce to describe the process of breaking down complex tasks or concept into smaller or manageable parts बड़ा बड़ा complex task को हमें जो छोटा छोटा पार्ट रे भांगी दो छोटा छोटा पार्ट भांगी कि प्रतिटी पार्ट को we called it a chunk आको कौन को chunk हो ऐसे प्रोसेस को कौन कह जाए चंकिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज चंकिंग चंक और बीट माने कौन मु तुमको काली गोटे कहूली फॉर एग्जांपल तुमनकर गाड़ी नंबर मन रखुछ गोटे OD 02 AW 822 हमें एमती कहे OD 02 AW 822 हमें पूरा गोटे गोटे मन रखुछ OD 02 AW 822 एमती मन रखुचे ना को जोड़ी जोड़ी मन रखुचे ये जोड़ी OD 02 AW 822 एमती जोड़ी जोड़ी मन रखुचे जोड़ी जोड़ी मन रखा प्रोसेस को कह चंकिंग फोन नंबर जब मन रखुच फोन नंबर मन रखुच कि 7 9 7 8 9 6 9 1 6 4 इन मन रखुच फोन नंबर की इन मन रखुच ना जोड़ी जोड़ी मन रखुच इन मन रखुच कि 7 9 7 8 9 6 9 1 6 4 एमती मन रखुचे ना एमती मन रखुचे 7978 969 164 एमती में जोड़ी जोड़ी मन रखुचे जो जोड़ी जोड़ी मन रखती ताको कहा जाए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज चंकिंग to make it a meaningful chunk
बुझ ना नहीं दैट इज कॉल्ड एज चंकिंग सप्तम शून्य शून्य अष्टम नहीं सेमती दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज चंकिंग ओके दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज चंकिंग हम एमडी मन रख पन्न बुड़ा यात्रीगण दयाकर ध्यान दिंतु गाड़ी संख्या 1 8 9 5 4 जहा हावड़ा संबलपुर जीवार थिला ता 8 घंटा 45 मिनिट विलंब चालू अच्छी यात्रीगणकर असुविधा आम दुखित Passenger kindly attention space. The guide number 12875 was running from Howard to Sambalpur. Is running late by 8 hours and 45 minutes. The inconvenience is duly regretted. चलो एगो चंकिंग को जाए ना मूव फोन नंबर चल in the context of discovery learning what does situational interest situational interest refer to situational interest में क्या कहबा a learner's innate capacity innate curiosity and motivation to explore a specific topic or concept, the environmental context, now the specific set of materials used for a learning task, now the level of prior knowledge a learner possesses about the topic. Situational interest को learner innate curiosity और motivation. Interest को पचे interest को learner curiosity और motivation ही बहुत matter करे. ब्रूनर क्रे हमें कार्यक्रम शेष करता है इन ब्रूनर्स थ्योरी What is the characteristics of inactive mode? Inactive mode माने हुई तीन टा मोड क्वेश्चन ब्रूनर inactive, iconic, symbolic. When you learn by action, that is inactive. Learn by picture, that is iconic. Learn by words, that is symbolic. Learning through physical action and motor skills, हाँ एटा ही inactive. Learning through image iconic, एटा symbolic. एटा iconic mode, एटा symbolic mode. Okay. Answer is A. Score कितना ला पिला मैंने मैसेज कर दो. How much we have scored? एटा ला स्क्रीन रे अच्छी. अपन माने एटा कमेंट सेक्शन में आंसर देबे. Homework. सेशन को उधर लाइक कर दे पिला एवरीबॉडी. मोर देन 115 लर्नर्स आर देयर मिनिमम 100 लाइक तो कर दवा कथा. वो कहउतल तुमको OSSC रो पिला माने RIRA रो बही अछि. बही परचेज करि परिबे Y594S कोड अप्लाई करी कि बही जन बकथा नै पारे पिला माने कैन परचेज. एरे रो बैच गोटे 5 मार्च स्टार्ट हेछि बैच जॉइन नै परिबे. अनसन को मैथ बैच ये सब बढ़िया कथा ना ऑफलाइन न टेस्ट सीरीज बही ना पूरा ऑफलाइन न टेस्ट सीरीज पूरा हेतिबो ओइ मार सहित जीवो घरे बसिबो टेस्ट दबो ठीक अछि. आज मु 4-5 टा क्वेश्चन रिपीट भी हे जेतला 3-4 टा क्वेश्चन रिपीट हे जेतला सॉरी फॉर दैट. ता सहित पिला माने SSB TGT रो बैच 15 फेब्रुआरी रो स्टार्ट हेछि. बीड एंट्रांस रो बैच ओडिशा बीड एंट्रांस रो बैच 23 मार्च रो स्टार्ट हो. तमें हो कि तुम सांग साथी भाई भौणी जी हो गर्लफ्रेंड रो भाई हो कि बॉयफ्रेंड रो भौणी हो जी भी हो जॉइन करि परियो तक. PGT एजुकेशन बैच 2 अप्रैल स्टार्ट हो. SSB PGT एजुकेशन कंप्लीट बैच Y594 कोड अप्लाई करियो एंड जॉइन द बैच. तो डू द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज लुकिंग एट यू. ये तुमको देखू न देखू ठीक कर ठीक करथा फॉरगेट द वर्ल्ड अनेक कथा छाड़ दियो. यस थैंक यू सो मच बीइंग इन द क्लास. आपण माने जो होमवर्क देली होमवर्क आंसर कमेंट बॉक्स रे देबे सेशन के लगला जणाइबे. थैंक यू अभिष्मान नमस्कार.